देखते आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं आईएमपी न्यूज फ्रॉम लंदन। ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने 13 जनवरी 2024 को दुनिया भर की दीगर तंजीमों के साथ मिलकर पहली तालीमी ऑनलाइन सेशन का कामयाब आगाज किया। ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने जो वादा किया था, अल्लाह ताला की फजलो करम से हम सब इसको पाए तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। जो लोग किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारी क्लास अटेंड नहीं कर सके, वो ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो से भी मुस्तफीद हो सकते हैं। Okay, now go ahead. I'll just start with the Excel. Once we'll click on the Excel, we'll find you must have installed this Excel in your system. So once you will write Excel, there is the application over there. I'll click it and we'll open the Excel file here. One second. I'm not going into the details how you will install Excel 2016 or whatever you want, but it is, I suppose you have already installed in your system. So I'll move forward and I'll work from opening a file in Excel and then we can move forward. मैं किसी को भी Excel इंस्टॉल करना नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। और अब हम जो है Excel को प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को। और उसके बाद तो जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आती है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। जब जैसे हम एक्सेल को इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास एक विंडो पॉपअप आएगी, एक विंडो आएगी जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट को हमको स्टार्ट करना है तो हमें बताई जाएगी। एक मिनट में आपको थोड़ा सा हम MS वर्ड की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी आपको एक्सेल का बताना ज़रूरी है क्योंकि तमाम ऑफिसेज वगैरह में या किसी शॉप्स के हवाले से जो भी लोग अपना काम करते हैं उसमें इन लोगों को बहुत हेल्प देगी। इसलिए ये एक्सेल का हम लोगों ने मॉड्यूल स्टार्ट किया है। इसको क्लिक करने के साथ ही आपको थोड़ा सा वेट करें, ये भी लोड हो जाए, देन आई विल कम टू द पॉइंट। इंशाल्लाह आई होप कि जब आप ये अपना सेशन, ये अपना एक्सेल को सीखना शुरू कर देंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि बहुत सी चीज़ें जो डाटा के हवाले से हैं, कि जिसमें अगर आप स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं या किसी के लिए भी काम करते हैं, तो उस डाटा को प्रॉपरली अरेंज करना आपको आ जाएगा। बेसिकली ये एक्सेल की ज़रूरत ही हमें उस डाटा को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अच्छे डिसीजंस ले सकें। अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे तो हमारे ये बिज़नेस के लिए एक अच्छा साइन होगा। हम इंशाल्लाह उन एनालिसिस से आगे अपने बिज़नेस को लेकर जा सकते हैं। या कहीं जॉब करते हैं तो उस जॉब में उन लोगों के लिए भी ज़ाहिर पते रिक्वायरमेंट्स आएंगी। ये मैंने क्लिक किया एक्सेल पे, हमारे पास ये विंडो आ जाती है जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो है बहुत से रिसेंट ओपन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सेंटर में आप देख सकते हैं ब्लैंक वर्कबुक है। ये ब्लैंक वर्कबुक से ही हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास ऊपर आप देखेंगे तो सजेस्टेड ऑप्शंस देते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं बेसिकली एक्सेल की तरफ से, जिसमें आप कैटेगरीज हैं बिजनेस, पर्सनल, प्लानर्स वगैरह की। हम स्टार्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ही करेंगे ताकि हम लोग, क्योंकि ये भी इनिशियल सेशन है तो इसमें आपको बेसिक्स बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ही अपने काम को शुरू करता हूँ एंड विल सी कि जब ये blank document open होगा तो we'll be having some different options how to start. For English listeners, I'll tell you, once we open Excel, we get some options of, you can see upside like there are some categories are mentioned in business, personal, planners, list, and all these stuff. These Excel provide us in these type of templates, so we can use them accordingly as per our need. But we are not going into the details right at the moment. What we are doing, we'll just start with a blank document so we can understand how basically Excel works and how it can give us benefit. I'm just opening a blank document now. This blank document, I'll tell you, there is at the top, you can see in the green color, there is a toolbar. It is called toolbar. ये ऊपर जो हम लोग को ऑप्शन दिख रहे हैं इसको टूल बार कहते हैं। इसके नीचे हमारे पास एक जो
इसके अलावा ग्रुप्स की सूरत में मुख्तलिफ टूल्स हैं, इसको रिबन कहते हैं. At the below this toolbar we'll find what you call it, ribbon, and it has multiple options as well. In every group of toolbar there is one small option is there to open some more tools. There we have we can modify our data in different ways. Other than that, we have this where fx is written. This is our address bar. This is our function bar, and on the left hand side you can see 1 2 3, these are our rows, and on the top ABC, these are our columns. मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ABC की शक्ल में हमारे पास कॉलम्स हैं और लेफ्ट साइड में हमारे पास रोज हैं. ठीक है, ये रोज और कॉलम्स बेसिकली हम लोगों को इसमें हम जब डाटा फीड करेंगे तो हम इसकी किस तरह काम करेंगे मैं आपको बताऊंगा. इसके अलावा ये जो हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, these are called cells. ठीक है, इसके अंदर हम each cell has different we can insert data in each cells. So we can I'll show you how we can insert data in these. और on the top left यहाँ पे B7 लिखा हुआ है रिबन के नीचे. ये हमारा एड्रेस है. जो भी एक्टिव सेल होता है, which one is an active cell, the exact address is shown in the address bar. In this case it is B7. So these are some basic things I needed to tell you. आप लोगों को उम्मीद है कि इन बेसिक टूल्स के बारे में कुछ चीज़ें समझ आई होंगी. नीचे सबसे जो है हमारे पास शीट है. शीट में हम लोग नेम, किसी भी शीट का नेम रीनेम करना हो, if you want to change the name of the sheet, at the bottom you can see where the name is written, there we can change that. अच्छा, तो हम लोग किसी भी एक फॉर एग्जांपल हमने जो लाइव क्लास में जो स्टार्ट की थी, जो हमने शीट बनाई थी, हम उसी को दोबारा से एक बार फिर वो शीट बनाते हैं, बल्कि उसी को रिकॉल कर लेते हैं. फाइल में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास रिसेंट में हमने एक टेस्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाया था. हम इसी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. कि हमने एक स्कूल के लिए समझते हैं, अगर हम स्कूल में हमारे पास हम उसकी वहाँ जॉब करते हैं, हमारा अपना स्कूल है और हमारे पास कोई स्टूडेंट्स की एक बेसिक सी हमने शीट बनानी है जिसमें क्लास के सारे नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए और क्या उनकी परसेंटेज रही, इसके हवाले से हम एक शीट बनाएंगे. हमने रादर ये वाली शीट बनाई थी. एक और इसको अब एक और शीट बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. यहाँ प्लस पे मैंने क्लिक किया और एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गए. किसी भी जगह हम जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे हम उसी सेल में हम बेसिकली डाटा को टाइप कर सकते हैं. मुझे फर्स्ट कॉलम में टाइप करना है. मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लोबल मेमन क्लास. ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजल्ट फॉर फर्स्ट बैच. हम लोग ने यहाँ पर ये देखिए एक लाइन छोड़ के मैं यहाँ पर वो कॉलम लिख लेता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है. मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, उनका रोल नंबर अगर है तो, किस सिटी से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं और उनकी परसेंटेज किया. ये मैंने किसी एक टाइप की है, बड़ी बेसिक सी एक शीट है. इसको मैं साथ साथ आपको ये टूल्स भी समझाता चलूँ. ये हमारे पास जो कॉलम है, इसको अगर हम यहाँ पर माउस पर कर्सर लेकर जाएँ तो ये प्लस के साइन में चेंज हो जाता है. इसको पकड़ के हम ड्रैग कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स जो वो अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली, this is our basic sheet which we are going to prepare, and once we start typing in the sheet, this is this basic details I have mentioned in the sheet. I'm just going very quickly so you have to understand, and you can you can play this video in slow mode as well with less speed so you can understand easily. Once we will move the cursor over this column, you'll see there is one plus sort of sign comes over there. You just click it, hold it and drag it. Once you will drag it on the right, I'm just dragging on the right, then you can adjust the width column, the column width. Okay, the same way we can just arrange the width of the columns.
Another way is that you just bring the mouse cursor over there and double click that one, it will automatically be adjusted. Okay, so this is the way you can adjust the column of the width. Same way you can drag the row height as well, and you can fix the height as well of the rows. I'm just clicking it. Now I'll just move how to what is the use of these tools. Here is the copy. Copy is just to click any of the cells, just copy it. Once you will copy it, this paste option will be highlighted. If you want to paste the same thing over there, you can just paste it and it will be pasted over here. Okay, just to let you know exactly how does it work. I'm just deleting this one. Press delete and it will be deleted. Now I'm just formatting this, rather I will just copy the data from the old sheet, so I don't need to make all the details again. First is serial number. I'll just write serial number. Once I will write 1, 2 and 3. Once I will just select all these 3 numbers and I will just drag it down, it will automatically be filled with the same serial number. Okay, आप लोगों को बता दूं कि जब हम 1 2 3 लिखते हैं किसी भी कॉलम में और उसको जब सिलेक्ट करके जब हम ड्रैग करते हैं तो हमारे पास एक्सेल ऑटो इसको फिल कर देता है और उसकी सीरीज को ले चलता है। लेकिन अगर मैंने 2 3 नहीं लिखा और सिर्फ मैंने 1 1 करके लिखा और फिर मैंने इसको जब सिलेक्ट किया और जब मैंने चला तो ये सब में 1 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जो सीरीज देंगे इसी को अकॉर्डिंगली चलेगा ये। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमने नेम ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी का तरीका मैंने आपको बता दिया। मैंने इनको कॉपी किया, ये सिलेक्ट किया, पहले कॉपी किया, शीट दूसरी शीट में गए, इधर जाके मैंने पेस्ट करा, लेकिन पेस्ट के साथ साथ इसका फॉर्मेट भी पेस्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अंडू करूँगा और मैं पेस्ट करने में यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मौजूद है जो इस पेस्ट स्पेशल में हम लोग को मिल जाएंगे। I'll just click on the paste special and I'm just pasting the data from the other sheet, from the GMO sheet. And once I will click on the paste special, I'll see some options over there. I just need to paste the values which I have just copied. So I'll just put the values, click on it and okay, it will be only the names will be pasted over here. Okay, then the roll numbers the same way. What I'll do, I'll select all these 3 columns because same data I need to be copied. So I'll just select those ones, copy it, and here I'll go again. I'm keeping the active cells here, the first roll number, and I'll mark it paste special values. Okay, all the data will be pasted here. In the last there is a percentage. Percentage always has some formula. Percentage निकालने के लिए क्या formula है? I'm just writing the formula here. Equal to, every formula will be started with equal to. Okay, so पहले मैं I will write equal to. Let me give you how many, what is the total mark. The total marks are, for example, 1500, and I'm just now the percentage formula will be equal to. I will write this cell. I tell this Excel, take this cell and then divide it. We have on the keyboard this sign, you remember that one, and divide by 1500. When I press enter, I will get the percentage of this person of Ali, and once I will there is another option. Either I will copy it and I will select all the columns. I can paste that one straight away. I will paste that one. But the value, all the formulas have not been copied properly. So there is an error in it. I'll let you know exactly what is that error. What happened? In this formula, I have divided 250 by 1500, but in the second column, it moved further. When I moved down, it moved from here, from 1500 to here percentage. So I just don't want this cells to be moved from 1500. So what I'll do, I'll just fix it, and how this Excel should not leave this cell. Okay, so for that reason I will keep the cursor here. I will write dollar and also another dollar. This dollar sign will fix the column F and cell row 3. Okay, so once I will just make it fixed, then I can copy it.
Now I will again do the same thing. I'll select it, I just copied it, I'll paste it. Now the percentages are coming, but percentages have some different sort of format. I'll just need to fix the format as well. मैंने देखी किस तरीके से इसको सेल इसको परसेंटेज को कैसे निकाला। मैंने E5 के कॉलम को डिवाइड किया है F3 के कॉलम, ठीक है। इसको मैंने कांस्टेंट रखने के लिए, फिक्स करने के लिए डॉलर का साइन यूज किया। जब आप डॉलर का साइन यूज करेंगे तो ये जो आपका सेल है ये एक्टिव ही यही एक्टिव रहेगा, यही फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं होगा। अब मैं जब कॉपी करता हूँ तो एक्सेल क्या करता है, एक्सेल इस यहाँ पर मैंने जो पेस्ट किया यहाँ पे, तो इसने इस कॉलम को आगे लेकर चल रहा है, इस अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मैं यहाँ पर नीचे जाता जा रहा हूँ, लेकिन इसको भी नीचे कर रहा था। लेकिन मेरा ये डॉलर साइन लगाने के बाद इसने अपना 1500 का सेल को फिक्स कर दिया, और इसने हर दफ़ा 352 को 1500 से डिवाइड किया, 152 को भी 1500 से डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। परसेंटेज का ये तरीका शो करने का सही नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये मेरे पास फॉर्मेट का एक ऑप्शन मौजूद है, सेल का फॉर्मेट, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स मौजूद है, जर्नल, अकाउंटिंग, करेंसी एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे परसेंटेज को क्लिक किया तो मेरे पास ये परसेंटेज की फॉर्मेट में आ चुका, ठीक है। उम्मीद आपको इतनी समझ आ गया हो। तो अब मैं इसके थर्ड फेज में फॉर्मेटिंग की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये कुछ टूल्स मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप का तो बता दिए। सेकंड ग्रुप में हमारे पास कुछ चीज़ें मैं फटाफट इस पर ओवरव्यू देता हूँ। किसी भी सेल में अगर कोई आपको ने कोई डाटा फीड किया और आप उसका फॉन्ट चेंज करना है, जस्ट सेलेक्ट दैट एट सेल, मेक इट एक्टिव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये इसका आप फॉन्ट एरो पे क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉन्ट्स। यहाँ पर क्लिक कीजिए, फॉर एग्जाम्पल रेडियल ब्लैक कर दिया मैंने इसको, तो ये हमारे पास इसका फॉन्ट चेंज हो गया। इसी तरीके से मैंने सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, इसका कुछ और डिफरेंट फॉन्ट रखना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग द फॉन्ट एंड आई पुट इट लाइक फॉर एग्जांपल मेक इट ओल्ड स्टाइल, ओके। The next thing is total marks. I will hide those ones because sometimes, okay, or rather I can make it make it bold, italic, underline. These are three types of basic formatting which is kept here. यहाँ पे हम लोग उर्दू जो समझना चाह रहे हैं, हम किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करना चाहें या किसी को अंडरलाइन करना चाहें या इटैलिक करना चाहें, कर्सिव में लिखना चाहें, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, और अगर मुझे पूरी रेंज को चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द कंप्लीट इन ऑल द सेल्स फॉन्ट, आई विल चेंज फ्रॉम हियर। फर्स्ट आई विल सिलेक्ट दोज वंस, इनको पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये हमारे फॉन्ट्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट ले लूँगा और मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है। हमारे पास ये फॉन्ट था, मैंने इसको, इसके बाद ये हमारे पास इसके साइजेस चेंज करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको 14 कर दिया। ये हमारे पास यहाँ से भी हम फॉन्ट्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स में मैं आता हूँ लास्ट में। हमारे पास फिल का है ऑप्शन, अगर मुझे सेल्स में कोई कलर फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लिक किया राइट, तो यहाँ पर ग्रे स्केल है, मैं इसकी ग्रे स्केल मैंने इसका कलर कर दिया चेंज। फॉर इंग्लिश लिसनर्स, if I want to fill the cells with different colors, here is the option available. I'll just select the entire range of the cells and then I'll click over here, fill colors, and from here I can select different type of colors, okay. So in this case I'm just putting it a bit gray style, so I'll click it and the color will be changed. Same way, this is the font colors change, or then I'll just again the selection was there and I'm just changing the colors, so here I can change the colors, okay. The same way I can change the fonts and everything after selecting those cells and make them active, okay. अच्छा, अब हम इस डाटा को इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट एक सेट है टूल्स का, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट में विल सी व्हाट हाउ डज इट वर्क। आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस फर्स्ट कॉलम, okay, and I just click here. So what happens, all the cells, they have been aligned upward, okay.
This is, and we have other option. We can make it centralized, middle align, and here we have the bottom line. So and for these options, here is the left align, center align, and right align. Okay, so I will use these ones. I'm just clicking the entire column, and I'll just make it centrally aligned. Okay, this I don't want. This I want to be the same way it was before. Only this I need to change. मुझे सिर्फ ये फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है. आई सिलेक्ट द फर्स्ट कॉलम. मैं फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करूंगा एंड आई एम गोइंग टू मेक द चेंजेस. इसी तरीके से मुझे द सेम वे आई हैव टू डू द अदर चेंजेस. यू कैन सी आई एम मेकिंग इट सेंट्रली अलाइंड. ये सब सेंटर में अलाइन हो गए हैं. द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मुझे इन सब की सब में बॉर्डर्स यूज करने हैं. तो आई एम जस्ट यूजिंग सॉर्ट ऑफ बॉर्डर्स, ताकि ये एक और चीज़ बता दूं कि ये सेल्स में हमारे पास जो लाइंस शो हो रही है ग्रिड लाइंस हैं, सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट दे आर नॉट विजिबल. ये विजिबल नहीं होंगी व्हेन वी विल print those ones. Okay, it will not being shown on the print. How? I'll show you. I'll show you. Like once you will click on the file and click print, here you will see there are no lines over there. But if you see here, you have multiple lines. These are the grid lines. So basically we have to draw some lines. हमें कुछ lines यहाँ पर बनानी पड़ेंगी ताकि जिसे हम borders कहते हैं, ताकि हमारे पास इसकी proper presentation हो जाए. तो मैं पहले इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ. इस कॉलम को मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिव सेल ये है. अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा. इसका मतलब है सेल एक्टिव जिसमें कुछ डाटा है वो यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ. मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल ड्रैग इट टिल हियर. ये पूरी कंप्लीट सिलेक्शन थी. आई विल क्लिक हियर. इट इज मर्ज एंड सेंटर. ये तमाम सेल्स को मर्ज कर देगा. इट विल मर्ज ऑल द सेल्स एंड मेक इट सेंट्रली अलाइन. सेम वे आई विल सिलेक्ट दिस वन. इसको सिलेक्ट करूँगा, मर्ज एंड सेंटर. ये भी सेंटर में अलाइन हो गया. अब मेरे पास ये सेकंड ये जो हेडिंग की रो है, आई विल सिलेक्ट दैट वन. आई विल गो टू द border area. This is border. These are the borders. Many options are there. I can make different type of borders. For example, thick outside border. If you see, there is one thick outside border in there. But if I have to make multiple changes, what I'll do, I'll click on this small arrow, and here the more borders are there. यहाँ more borders पे click करेंगे, and we will see one pop-up window came, and we'll just from the outline we can change the outside line. First select the line, the border that you want to draw, then click outside, and once I will click OK, the border will be changed. Okay, but I'm just keeping it the same way it was before. So पहले जैसा कर देते हैं. more borders पे गए, बोर्ड लाइन को सिलेक्ट किया, आउटसाइड पे क्लिक किया, बोर्ड लाइन आ गई. इनसाइड में चाह रहा हूँ यहाँ पे जो अंदर की लाइंस हैं, इनसाइड लाइन शुड बी डॉटेड वंस. आई सिलेक्टेड द डॉटेड वंस एंड हियर इट इज रिटन इनसाइड. आई क्लिक इनसाइड, क्लिक ओके, और ये अंदर की लाइंस लग गई. सेम आई वांट सेम थिंग दिस इन दिस टेबल. मोर बॉर्डर्स. Here I will make the outside lines in this way and inside the dotted ones. So now when I just see here as print, here you can see the lines are there. Okay, so these are how you draw the lines basically. And one more sort of formatting you can do is select the second line just to make the data more visible. Click here to fill the data, to fill the cells with the gray colors. Same way here. Here I am now pressing Control key. If you press Control key and when you select it, you can select multiple lines. Okay, I am selecting all the lines and all together I am clicking here and fill the color. तो जब आपको एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं, आप कंट्रोल की प्रेस करके और अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन प्रिपेयर अ शीट. और आपको मैंने कुछ इसमें बेसिक चीज़ें बता दी. एक और चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू थिंक दिस सेल इज अ बिट बिग, यू वांट टू मेक इट अ स्मॉलर वन, but data becomes invisible, you cannot see all the data what is written inside. यहाँ पर एक ऑप्शन है wrap text. It will it will keep the data in one side. Okay, in this way. So एक wrap text भी मैंने आपको बता दी. So this is the angle of this font. You can make them change. You can change the angle here, but we normally don't need these type of things.
ओके, थैंक यू गाइस, आपको मैंने ये बेसिक चीज़ें बता दी, होप यू हैव अंडरस्टूड दीज बेसिक थिंग्स, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मूव फॉरवर्ड, ताकि आप इनकी सबकी प्रैक्टिस करके रखिएगा, एंड फिर हम इसको कुछ असाइनमेंट भी आपको मैं दे दूँगा, ताकि आप अपने एंड वर्क कीजिएगा, एटलीस्ट जो भी आपको सिखाया उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।